Good evening. It is a grim Sunday. The big story at this hour, 10 people have died and over 100 are missing and feared dead after a glacial break in Uttarakhand's Chamoli district triggered off an avalanche and then massive flooding of the Alaknanda river on Sunday morning around 11 a.m., forcing the evacuation of thousands, damaging both houses at the nearby Rishiganga and the NTPC power projects. Bodies of 10 people have been recovered. The Uttarakhand Chief Minister has announced 4 lakh rupees in compensation for the family of those who have been killed. Mr. Rawat also said that teams from the police, the army and the ITBP as well as from the national and state disaster response forces are doing their best to save the lives of the workers at the sites that have been affected by the disaster. So, a glacial burst, this in Uttarakhand's Chamoli district, that triggered off an avalanche that has led to massive flooding. This along the Alaknanda and Dhauliganga rivers. This has forced the emergency evacuation of thousands of people who live in the surrounding areas, causing damage to houses and a nearby power project. So, let's take a look now again at what we know so far. First, 10 bodies have been recovered. 5 NDRF National Disaster Response Force teams as well as hundreds of ITBP personnel have been deployed for search and rescue operations, with authorities fearing that hundreds could still be stuck. We have around 250 SDRF, that's the State Disaster Response Force personnel, who have also been deployed. Night has now set. Lighting arrangements for carrying out around-the-clock rescue operations have been made at the site. The Uttarakhand Chief Minister has announced 4 lakh rupees in compensation for the families of those killed. And let's take a look at this dramatic video that showed a successful operation where a worker in Uttarakhand was pulled out of a narrow tunnel. Take a look at the size of that tunnel. He managed, the rescue workers, the personnel of the Indo-Tibetan Border Police or the ITBP actually managed to pull out this worker from this narrow tunnel. The ITBP has been pressed into the rescue operation after that glacier break and the subsequent flash floods in the state's Chamoli district. And I'm just going to listen in to the cheers that go up amongst that team as they managed to pull that worker out of that tunnel. जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। Tapovan Dam is run by NTPC. Both these dams were almost under construction.
that big volume of water overflowed both these dams and caused damage to these two dams. But water has been controlled downstream around Helen place, which is downstream by 13-15 kilometers of Joshimath. Large number of workers were working at these sites. They are still missing. Around 9 to 10 dead bodies have been recovered till now. And there is tunnel at the Tapovan dam. 15 to 20 workers are also there in the tunnel, which are being rescued very short. अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो ऊपर क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था, उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे। उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं। तो एक 29-30 के आसपास वहां पर अनुमान है, लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट के कोई बच्चे ही नहीं है कि कागजों के आधार पर कुछ कह सकें। NDTV मार्च कर चुकी है, उसके बाद ITBP के आदमी पहुंच चुके हैं वहां पर। हमारी जो SDRF की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच है। So as India scrambles to deploy its various forces in search to salvage and rescue, carry out these rescue operations in Uttarakhand following that major disaster in Chamoli. Joining us now is Swati Bhaduria. She is the district magistrate of the Chamoli district. Joining us now, Ms. Bhaduria, thank you so much for your time. I know this is a very difficult evening for you and you're extremely busy. So, ma'am, the night has set, but we have at least 100 persons or so still missing. What are the operations like on the ground, given that darkness has now set? On the ground, we have arrangements for Askalite, all excavators and Pokeland working over there, and we have all working, and we'll keep working throughout the night, and we are around the spot. And secondly, we have already rescued 12 people from one of the tunnels and 13 people from another site. So 35 people have already been rescued, and they have all been taken to the hospitals and they are safe. They are it was all minor injury, and we are focusing on safely rescuing the people who are still trapped in the tunnel, and hopefully we will try and rescue them soon. Lekin it will, I think it will have to continue for the next, this maybe throughout the night. So through the night. But ma'am, the condition of the persons who have been rescued, they are generally safe. They're physically okay. They're unhurt. Is that correct? Because then that would mean it's just a matter of time before the rest can be rescued. It's not, there isn't the added seriousness of anybody being horribly ill or severely injured who needs to be rescued. Is that correct, ma'am? Injured, they are all with minor injuries, and they're all being treated in the hospital. They're all safe. Ma'am, could you help us with the logistics? Who all do we have working on the ground? The SDRF, we are of course reporting about the SDRF and the NDRF. NDRF is already the way, and SDRF has already reached here. We are on our way, we, SDM, and the... Miss Ms. Swati Bhaduria, are you still there, ma'am? All right, we seem to have lost the line there with Swati Bhaduria, the district magistrate of the Chamoli district, but she has just updated us to say that at least, she said 13 personnel have additionally been recovered from these tunnels, under construction tunnels, where 100 at least are believed to be trapped for now. But the district magistrate of the Chamoli district, where this disaster has taken place, making it clear that rescue operations will be continuing through the night. The rescue and relief operators, the personnel here, there's no question of anybody taking a break. Time is of essence right now, and they will continue to work on these operations through the night. Remember, India is scrambling now to deploy our various forces to search, salvage and carry out rescue operations in Chamoli, in Chamoli this evening. Let's go close to Dinesh Mansera. NDTV's Dinesh Mansera joins us. Dinesh, you're on the ground there.
Night has fallen. People have been evacuated from this region. What's the situation like? What are the fears of the people on the ground after having gone through and witnessed and seen such a disaster this morning? देखिए, सुबह से ही ये जो हादसा है उसके बाद से जो सिचुएशन है, इस समय जो एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है, आईटीबीपी और सेना के जो जवान हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। तपोवन में भी और ऋषि, जहां पर ये ऋषि पावर प्रोजेक्ट था, ऋषि गंगा का पावर प्रोजेक्ट था, वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस समय सिचुएशन ऐसी है कि अंधेरा है और दलदल है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। और जितने वहां पे जेसीबी या और जो मशीनें मंगाई गई हैं उनको दलदल में उतारना इस समय बहुत मुश्किल काम है। तो इंतजार किया जा रहा है। कुछ लाइट्स वगैरह भी लगाई गई हैं, लेकिन लाइट्स वगैरह की इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो जो वहाँ पे ग्राउंड में जो सिचुएशन है उसमें उसकी में बहुत सी दिक्कतें हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अभी इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन वो नदी के किनारे किनारे तो हो सकता है, लेकिन नदी के बीच में जा करके काम करना एक बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा सुबह होने तक वेट किया जाएगा और सुबह तड़के ही रेस्क्यू ऑपरेशन और फिर शुरू किए जाएंगे। और अभी जो हालात जो पता लगे हैं कि जो सुरंग में 16 लोग थे उनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। कुछ तपोवन एरिया में भी कुछ लोग लापता थे, तो उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है और उन लोगों को भी सुरक्षित बचाया गया है। तो कुल मिलाकर के अभी तक ये जानकारी आई है कि 25 लोग जो हैं वो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। लेकिन जो 160 के करीब मजदूर हैं जो लापता हुए, जो इस नदी के प्रलय में बह गए, इनका अभी तक कोई पता नहीं है। उसमें से 10 शव जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन जब और तेज होंगे उसके बाद से जो सही स्थिति है वो सामने आएगी। हालांकि जो गंगा का पानी है या अलकनंदा का पानी है वो इस समय शांत है। ये एक बड़ी बात है कि उससे नीचे के शहरों में खतरा वो टल गया है। All right, so that is a very important clarification. Dinesh Mansera giving us, of course, an extremely challenging task on the ground. But through the night, Dinesh, aap keh rahe ho that the waters have settled, the gush, these huge volumes of water that we see right now bursting through that dam, the torrent, the river has settled, which means at least people in the area, including the rescue workers, can have a sense of calm as they work through the night. जी हाँ, इस समय जो है रात में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि जो पहाड़ की परिस्थितियां हैं जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पर जो वहाँ पहुँचने की जो रोड्स है उसके पुल भी बह चुके हैं। तो वहाँ पे पैदल जा कर के ही सब चीजें सिचुएशन हैंडल हो रही हैं। और आर्मी के लोग जो औली वाले यूनिट से आए हैं उन लोगों ने भी काफी कुछ काम किया है। अभी चुनौती इस बात की लेकर भी है कि 4-4, 5-5 रेस्क्यू एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं, उनका आपस में तालमेल कैसा हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस काम में जुटे हुए हैं और अलग अलग टास्क जो है उनको दे दिए गए हैं, अलग अलग एरियाज उनको दे दिए गए हैं। तो उसी सिचुएशन के हिसाब से सारा वर्कआउट हो रहा है। और जो मजदूर जो लापता हैं उनकी खोज के काम में जिस समय रात में तो बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि ठंड भी वैसी है। लेकिन ठंड की हालांकि इनको इतना वो नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी वहाँ जो दलदल बना हुआ है, जो मलबा इकट्ठा है, उसमें से लोगों को ढूंढ पाना एक बहुत मुश्किल काम है, जो संभवतः सुबह होने पर ही शुरू हो पाएगा। जी। All right, so the rescue relief operations having to take place on many fronts, but as Dinesh Mansera is pointing out, Dinesh, जो आप कह रहे हो कि right now the focus really is on the emergency rescue and relief operations of those trapped. Only after this will we start actually looking at the actual devastation and the evacuation of maybe hundreds along the path, along the banks of the river. We will look at that only later. Right now, we're focusing just on rescuing those who are trapped. Dinesh? Okay, we've lost Dinesh on the line there, but Dinesh on the ground there, really giving us a picture of just how challenging the task is for our rescue and relief operation personnels over here, because they have to now work through the night in the dark, trying to rescue those who are trapped underground now and in tunnels as tiny
as the one you're seeing right now, where you can see these personnel pulling out pulling out one of those workers, pulling him out safe and sound. He is throws his hands up in the air, and you can hear cheers go up from the entire team there who worked together to rescue him. But it's going to be a long night. There are many more still feared trapped. But the authorities on the ground saying that the rescue operations will go on through the night. So we're going to keep an eye on the story, of course. Let me just quickly shift gears here, bring you up to date with the other big stories of the day, and then come back to Chamoli in Uttarakhand. But earlier in the day, Prime Minister Modi compared the Mamata Banerjee government to a second version of the left front government in Bengal and said that there had been a rebirth of communism under her rule. The indicator, he says, was that politics has been criminalized and the administration has been politicized in the state. ममता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है, और वो भी ब्याज समेत, सूद समेत। लेफ्ट का पुनर्जीवन यानी भ्रष्टाचार का पुनर्जीवन, अपराध और अपराधियों का पुनर्जीवन, हिंसा का पुनर्जीवन, लोकतंत्र पर हमलों का पुनर्जीवन। आप लोगों ने कई बार सुना होगा खेल के अंदर मैच फिक्सिंग होता है, लेकिन अब लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल मिलकर राजनीति में पर्दे के पीछे मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। दिल्ली में लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल, ये तीनों एक साथ बंद कमरों में मिलते हैं, बैठते हैं, एक साथ मिलकर रणनीति बनाते हैं। And now on to Assam, where Prime Minister Modi visited for the second time in the last fortnight. And the occasion today was to lay the foundation of 2 medical colleges and launch the Assam Mala scheme to ramp up state highways and internal road infrastructure. Prime Minister Modi addressed a massive gathering in Juli, where people had laid down their lives during the Quit India movement. Prime Minister Modi claimed that there was a conspiracy to malign India by people from abroad and that they were not even sparing the Indian tea. All this, of course, after several people, including climate change activist Greta Thunberg, supported the ongoing farmers' protests. तो मैं इन दिनों देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों की भी बात करना चाहता हूं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है।